We'll kickstart this edition with some news just coming in. Well, a prominent Lashkar-e-Taiba terrorist, namely Adnan Ahmed, Hanzla Adnan, has been killed by unknown gunmen in Karachi. Hanzla had coordinated the terrorist attack on a CRPF convoy at Udhampur on the 25th of June 2016, resulting in casualties of 8 and injuring 22 security personnel. Hanzla had also masterminded the attack on BSF convoy at Udhampur in Jammu in 2015, in which 2 BSF personnel were martyred and 13 BSF personnel sustained injuries. Investigations in the said terror attack was carried out by the NIA, and the charge sheet was filed on the 6th of August 2015. A Lashkar-e-Taiba terrorist has been killed. 2 unknown men have shot Adnan in Karachi in Pakistan. He was a prominent Lashkar-e-Taiba terrorist. Arvind has more details on that story. Arvind, हंसला के बारे में आप क्या बता सकते हैं? इन्होंने कोऑर्डिनेट किया था टेरर अटैक सीआरपीएफ कॉन्वॉय में जम्मू में 2016 में, और भी कई सारे ऐसे अटैक्स के पीछे ये मास्टरमाइंड रह चुके हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए, ये जो अदनान अहमद उर्फ हजला अदनान है, ये इंडियन एजेंसीज के रडार पर काफी सालों से था, आपको बताऊं। और 2-3 दिसंबर की रात को इसको कराची में अननोन गनमैन ने गोली मारी है, जिसके बाद जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी ने इस पूरे इंसिडेंट को काफी छुपाया और उसके बाद इसे हॉस्पिटलाइज किया गया और कल इसकी मौत हो गई है। अगर हंजला की बात करें हम, तो जम्मू कश्मीर में फिदाइन अटैक जो होती थी, जो फिदाइन अटैक होता था, उसका पूरा तरह से उसको कोऑर्डिनेट करने का काम इसका था। और बड़ी बात है कि जो लश्कर चीफ हाफिज सईद है, उसका ये सबसे क्लोज था। उसके अलावा अगर इसके इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, खासतौर से जम्मू कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट की बात की जाए, तो हंजला ने साल 2016 में, आपको याद होगा, एक बड़ा अटैक कश्मीर के पोमपोर में हुआ था, जिसमें 25 जून को सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर यह अटैक हुआ था, जिसमें 8 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और तकरीबन 22 घायल हुए थे। दूसरा अटैक हंजला ने किया था साल 2015 में जम्मू के उधमपुर में, जहां पर बीएसएफ के कॉन्वॉय पर अटैक हुआ था, जिसमें 2 बीएसएफ के जवान शहीद हुए थे, 13 बुरी तरह से घायल हुए थे। इसमें सीधे सीधे हंजला की इन्वॉल्वमेंट थी। जो सोर्सेज है वो ये बताते हैं कि जो रावलपिंडी से रिसेंटली जो हंजला है उसको कराची शिफ्ट किया था पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने, और लगातार जो हंजला है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई गई थी। आसपास जो सिक्योरिटी पर्सनल है, गनमैन है, वो सिक्योर करके रखते थे हंजला को। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एसेट ये आईएसआई के लिए था। जो शूटर है वो इसके बेस कैंप के पास ही जाकर इसको गोली मारते हैं। तकरीबन 4 राउंड इसे गोली मारी गई है और उसके बाद इसे हॉस्पिटलाइज किया गया है और उसकी मौत हो गई है। लेकिन ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की एजेंसीज की जांच करेगी, लेकिन इंडियन एजेंसीज की बात करें तो ये लगातार रडार पे इसलिए भी था क्योंकि पीओके की तरफ से जो भी इन्फिल्ट्रेशन होता था, जो भी घुसपैठ जम्मू कश्मीर में होता था, उसके पहले जो अदनान है, अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान, ये बाकायदा एलईटी के उस कैंप में जाता था। वहां पर जो टेररिस्ट जो इंडिया में घुसपैठ करने की कोशिश करते थे, उनको मोटिवेट करता था। तो पीओके के आसपास इसकी मूवमेंट लगातार ट्रैक की जाती थी। ये लश्कर का ये एक तरीके से कहे कम्युनिकेटर एक्सपर्ट भी इसको माना जाता था। और 2-3 दिसंबर को जो सोर्सेज हैं उन्होंने बताया कि 2-3 दिसंबर की रात को इसको कराची में गोली मारी गई है। अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी है, तकरीबन 4 राउंड इसे गोली मारी है और इसे हॉस्पिटलाइज कराया गया, इसकी मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो पाकिस्तान की चाहे मीडिया हो, चाहे पाकिस्तान की एजेंसी हो, वो इस पूरे मर्डर को कहीं ना कहीं छुपा रही है। और शायद इसी वजह से जो पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े लोग हैं वो काफी गुस्से में है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान कभी अगर उसके सैनिक मारे जाते हैं इंडियन साइड, तो वो उनकी बॉडी क्लेम करने से इनकार करता है। अब
वो टेररिस्ट जो पाकिस्तान में रहकर इंडिया में लगातार फिदाइन अटैक करना, और आपने देखा कि 2 अटैक में सीधा सीधा 2016 में सीआरपीएफ के कॉन्वॉय में जो अटैक हुआ था उसमें अदनान ने बड़ा रोल प्ले किया था। और बने रहिए हमारे साथ अरविंद। इनफैक्ट गौरव सावंत is also joining us. Gaurav, this is the man with blood on his hands who's been killed now, Lashkar-e-Taiba terrorist, and like Arvind in fact was telling us that he was extremely active around the POK region here. So Adnan Ahmed was someone who was involved in a series of terror attacks in India, especially on the security forces around the year 2015 and 16, whether these were attacks on security forces and specifically the CRPF camp. Specifically the CRPF camp. The fact that these terrorists are now being killed in Pakistan, and if you take a look at this entire list, there are about 20 terrorists, 20 India's most wanted terrorists have been neutralized in Pakistan, and not just in one province, not just in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir, but like Adnan, terrorists have been killed in Karachi, terrorists have been killed in Khyber Pakhtunkhwa, terrorists have been killed in Pakistan's Punjab province in Sialkot, especially a terrorist like Shahid Latif, who was involved in the terror strike that had taken place on the Indian Air Force Base, Pathankot. This does point to a very systematic effort to neutralize those terrorists who pose current and present danger to India. And Sneha, if you look at this entire pattern, this is something that perhaps in Pakistan would require deeper investigations. That are intelligence agencies in Pakistan neutralizing terrorists, or is this inter-gang warfare that is taking place, or inter-terror group warfare that's taking place? Because these are Lashkar-e-Taiba terrorists, Jaish-e-Mohammed terrorists, Hizbul Mujahideen terrorists, and even Khalistani terrorists who are living in Pakistan are just dropping like flies, Sneha. It appears, and I'm going to talk to you about that. Gaurav, it's not one, but several other terrorists have been neutralized and killed in Pakistan. Let's get more details on that front. Let's take a look. Maulana Rahimullah Tariq, on the 13th of November, a Jaish-e-Mohammed leader, a close associate of Maulana Masood Azhar. He was killed. Also, Akram Khan, again on the 9th of November, a leader of the Lashkar-e-Taiba and the head of LET's recruitment cell. He also was killed. Khwaja Shahid, on the 5th of November, Lashkar-e-Taiba commander. Shahid Latif, again on the 11th of October, Jaish-e-Mohammed terrorist, mastermind of the 2016 attack on the Indian Air Force base in Pathankot. He also was killed. On the 3rd of March, Saeed Nur Shalubar, Islamic State Khurasan commander, recruiter for terrorist organizations, again active in Jammu and Kashmir. Saeed Khalid Raza, in the month of February, 27th of February to be precise, the Al-Badr commander waged jihad against India. Bashir Ahmed Peer, on the 20th of February, a Hizbul Mujahideen commander. Zahur Mistri, on the 1st of March 2022, Indian Airlines IC-814 hijacker who was killed. There's a list of terrorists who in fact have been killed over the last 1 year or so in Gaurav in Pakistan. And Gaurav, essentially there's a pattern to this, the manner in which they are getting killed in Pakistan. Just talk to us about the kind of investigations that go in the direction of these murders that we've seen that happen. In fact, there is a pattern to this. They are shot essentially when they're on the move, and there seems to be a pattern to all of this, isn't it? This is indeed very strange, the number of terrorists who are dropping like flies in Pakistan. And from what we gather, many of these are still active terrorists. These are not terrorists, like Hafiz Saeed or that Maulana of terror called Masood Azhar, who are the guiding lights of terror, and not active terrorists who are sending people across or helping people come across or arranging terrorists, arranging funds. And it remains to be seen whether as some were arguing on India First, we debated this, we discussed this on India First after Lakhbir Singh Rode was found dead and cremated rather mysteriously, or buried rather mysteriously in Pakistan on the 2nd of December after he passed away.
All of this seem to indicate that anti-India elements are being neutralized in Pakistan or are dying in Pakistan, and in big numbers. So whether it's Lashkar-e-Taiba that's trying to eliminate Jaish-e-Mohammed or vice versa, or it's Pakistan's ISI that's getting rid of some elements and trying to keep some others alive, it still remains to be seen what happens to terrorists like Dawood Ibrahim Kaskar living in Clifton, Karachi since the 1993 Mumbai blast, or what will happen to Hafiz Saeed, that professor of terror, mastermind of not just the parliament attack but 26/11 Mumbai terror attacks and a series of other terror attacks that have taken place in India, or that Maulana of terror called Masood Azhar. So a number of anti-India terror masterminds still remain in Pakistan, but a lot of these working hands of terror are being neutralized, Neha. Sajid Mir was poisoned in a Pakistan jail, and over the last 1 year or so, we've seen several such assassinations in Pakistan. Gaurav, I'm going to thank you for the moment for joining us with the very latest on that story.